Now, my dear friends, once we have understood what exactly is the relationship between delta H and delta U for a solid, liquid as well as gas, now we go into the next one, and that is we need to find out the expression for work in a chemical reaction. Okay, हम लोग ने दो expression already कर दिया है. एक for a pressure volume work, that was isothermal irreversible process, और दूसरा वो बड़ा वाला एक्सप्रेशन माइनस ऑफ 2.303 nRT log of V2 upon V1, वो कौन सा था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल. अब ये तीसरा करेंगे फॉर अ केमिकल रिएक्शन. सो वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन फॉर W in a situation where we have a chemical reaction. W means you know very well that we are talking about work done. So in a chemical reaction, if you want to find out what's going to be the work done, so this is the way we need to do it. And how? It's once again very simple. Okay, if you have understood the previous derivation, then I guess this is going to be very easy. It hardly takes 2 minutes. Alright? And that is, to begin with, when we consider the work done for an isothermal irreversible process, we have W is equal to minus of P delta V. Alright, this was expression number 1. Next is we go into the ideal gas equation. So when we talk about ideal gas equation, we say PV is equal to nRT. This is number 2. Alright. And then, if you remember, when we apply equation 2 to initial state and final state at constant temperature as well as pressure, तो हमें दो expression मिला था. P V1 is equal to N1 RT, P V2 is equal to N2 RT. This is expression 3 and expression 4. ये सब किया हुआ है मैंने पहले. Okay, याद आ रहा होगा. So this is just, I can say this part is just a revision for you. So final minus initial है, so 4 minus of 3. So we have PV2 minus of PV1 is equal to N2 RT minus of N1 RT. So P common है, so V2 minus of V1 is equal to N2 minus of N1 into RT. So P delta V is equal to delta NG RT. Okay, this is equation number 5. Okay, अब क्या करना है आपको? इस equation 5 को इसमें substitute करना है. So therefore, what we get? A new expression, and that is W is equal to minus of delta NG RT. ये expression हमें मिल जाता है. You getting it, everyone? So P delta V की जगह पर हम लोग ने ये substitute किया. So whenever we talk about a chemical reaction, we need to find out first of all delta N. Okay, so that means the reaction has to be balanced. And then please consider only those reactants and products which are going to be in the gaseous state. Okay, मैंने आपको बता दिया delta Ng क्या होता है. R fixed value, it's 8.314. And the temperature value will be provided to you. So if the reaction is given and the temperature value is provided to you, that means you can calculate the work done for that particular chemical reaction. It's as simple as that. Okay, next one is, okay, we can also say that W is equal to minus of N2 minus of N1 RT. तो अभी इसमें दो cases हैं दोस्तों. Case number 1 is, if N2 is greater than N1, that means the number of gaseous moles of the products is greater than the number of gaseous moles of the reactants. तो ये larger minus smaller तो positive आएगा. R and T are always positive. R is 8.314. Temperature is also positive. आप बोलोगे कि सर हमने तो टेम्परेचर सुना है ऐसा माइनस में जाता है यूएस कनाडा ओके इन दिस केस बट देन माय डियर फ्रेंड्स दैट इज इन डिग्री सेल्सियस एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर ऑलवेज गोइंग टू कंसीडर टेम्परेचर इन केल्विन और जब केल्विन होता है तो उसका लोएस्ट वैल्यू इज 0 इट्स नॉट नेगेटिव आई बात समझ में तो जब R and T are always positive so when you come over here N2 minus of N1 is positive into negative is what negative so W is negative
तो W नेगेटिव आएगा, और अगर W नेगेटिव आएगा तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, what are we going to say is work is done by the system. Okay, sign conventions, I hope you still remember this, and this is the important word. It is by the system. And common sense है दोस्तों, when it is going to be by the system, so it has to be on the surrounding. Concept is clear? Fantastic. अब सेकंड केस तो अभी आपको समझ में आ ही गया है. ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक कंसेप्ट पढ़ो और उस हिसाब से दूसरे को घुमाओ. ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी डू नाउ इज, अगर इसका ऑपोजिट कंसीडर किया जाए, N2 is less than N1. So that means the gaseous moles of the products is less than the gaseous moles of the reactants. तो फिर क्या होगा? Okay, N2 minus N1 मतलब smaller minus larger is always negative. ये आप जानते हो. So negative will be what? Positive. So we have W is positive. और अगर W positive है, so what are we going to say? The work is done on the system. Okay, ये वर्ड आ जाएगा. क्या वर्ड आ जाएगा? Work is done on the system. Okay, यहाँ पर by the system था, यहाँ पर on the system था. So you can see how the application goes. Okay, if you are given just a chemical reaction, this reaction takes place at a temperature so and so. Calculate the work done and also determine whether the work is done on the system or by the system. अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आया प्रॉब्लम तो आप इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हो. आपको टेम्परेचर दिया है. ओके, रिएक्शन बैलेंस कैसे करना, यू नो इट. ओके, यू हैव बीन गिवन द फिजिकल स्टेट्स आल्सो, सो ओनली कंसीडर द गैसियस वंस. यूज द फॉर्मूला, डेल्टा Ng का फॉर्मूला मालूम है ना, इट इज N2 माइनस ऑफ N1. तो आपको डेल्टा Ng मिल गया. R का वैल्यू तो ऑलवेज फिक्स है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट W. ये फॉर्मूला में डाल दो. फिर W जो आपको मिल रहा है, you find out whether it is negative or positive. If the W which you get at the end is going to be negative, that means the work is done by the system. And at the end, when after the calculation, if you get W is positive, that means the work is done on the system. It's so simple as that, my dear friends. Okay, I hope you have understood this concept very well. We now move into the next segment, and that the title is Enthalpy for physical transformation. When you use the word transformation, simple words, it is all about change. और वो change के लिए हम लोग ने क्या बोला है यहाँ पे? Physical. So you understand this very well, that the changes is only with respect to the change in the physical state. मैंने आपको बोला था कि in this particular chapter, we are going to consider solid, liquid as well as gas. Only these three states has to be considered in this particular chapter. So this conversion, when it takes place, there is some energy involved. And that is going to be considered under this particular concept, and that is enthalpy of physical transformations. Physical state में बदलाव होने के दौरान, okay, energy में परिवर्तन आता है और उसे हमें यहाँ पर consider करना है. So शुरू करते हैं सबसे पहला, and that is enthalpy of fusion. Now, enthalpy of fusion, उसका symbol is delta fuse H. So to begin with, the definition में the starting part and the ending part is same. Only जो conversion हो रहा है उसमें एक थोड़ा सा minute change है, that's it. So to begin with, it is a change in enthalpy when 1 mole of, अभी यहाँ पे चेंज आएगा, फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब मैं बता देता हूँ. Whenever I have a solid, I heat it, and at one particular temperature it melts. When it melts means what? It gets converted into, come on, yes, the liquid state. Most of the cases, exceptional cases are there, my dear friends, but majority of the solids on heating, it melts, gets converted into what? Liquid. दोस्तों, इसे फ्यूजन बोला जाता है. तो दोस्तों बताइए फ्यूजन किसका होता है, सॉलिड का कि लिक्विड का? जी हाँ, सॉलिड का. कोई लोग बोलते हैं लिक्विड का. लिक्विड तो दोस्तों मिलता है हमें, वी आर गेटिंग द लिक्विड, बट हु इज अंडरगोइंग फ्यूजन? सॉलिड. तो वो आपको यहां पर लिखना है. व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड अंडरगोज फ्यूजन at constant temperature and pressure. Then, okay, yani what has to be done is
only this part has to be changed, otherwise everything will remain the same. As I will be discussing, you'll come to know. So the beginning part is same, change in enthalpy where 1 mole of, and then it undergoes whatever the reaction that we talk about, and this is fixed at constant temperature and pressure. Okay? Now ये जो भी physical changes हो रहा, मैं आपको इसका example दूंगा in form of H2O. Now why it is? It's very simple. Because H2O is such a substance which can exist in all the 3 states, solid, liquid as well as gas. इसलिए मैं वो consider करूँगा. Alright? So let us consider first of all under this fusion किसका होने वाला है, solid का. तो क्या बोलेंगे हम, ice. Okay, आपको मालूम है ना, ice, water and water vapor. तीनों में the chemical formula is same, H2O. लेकिन physical state is different. Ice बोला तो it is solid. Water बोला तो it is liquid. Water vapor बोला तो it is gas. Alright? So, to start off with, H2O, solid, क्योंकि fusion है, it gets converted into H2O liquid. मतलब ice is getting converted into water. अब ice को water में convert करना है, ice freezer में बनता है, तो freezer में से उसको बाहर लेके आएंगे room temperature पे, तब जाकर वो मेल्ट होता है. That means the freezer temperature and the room temperature when we talk about, that means we are going from a lower temperature to a higher temperature. That means we are providing heat. और जहां पर भी heat absorb होता है, that means वो process in होता है. In मतलब endo, और endo है मतलब साइन क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, positive. So delta H is equal to positive 6.01 kilojoules per mole. Okay, this is what the units is. So 6.01 kilojoules of energy अगर 1 mole of ice को दिया जाए, so it gets converted into liquid, that is water. याद रखिएगा दोस्तों, the temperature is 0 degrees Celsius or we call it as 273 Kelvin. Understood this part? Now what happens is that water I once again put it into the freezer. What is going to happen? It's getting converted into ice. And now we are going from higher temperature to lower temperature. अब जब high temperature to low temperature है तो क्या करना है? We are going to add heat? नहीं. Addition of heat will raise the temperature. यहाँ पे the temperature is going down. So we are removing heat out. Out मतलब क्या? Exo. तो ये उसका reverse reaction हो गया. Okay? मैंने ice को water में convert किया, it is endo. तो अभी उतना ही water को अगर मुझे ice में convert करना है तो amount of energy will remain the same. लेकिन क्या होगा, यहां पर जो एब्जॉर्ब था भी रिलीज हो जाएगा, मतलब ओनली द साइन विल चेंज. समझ में आया? यानी द अमाउंट, द मैग्नीट्यूड विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. इफ द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज सेम, यानी सपोज इफ आई से द रिएक्शन इज सेम, then if I change the direction of the reaction, then what will happen is the magnitude, that is the numerical value, will remain the same, only the sign will change. यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? यस, एक्सोथर्मिक, एंड वाइस वर्सा. यानी अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक. समझा? अब ये जो प्रोसेस है दोस्तों, दैट वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू आइस, इसको फ्रीजर में रखना है ना हमें, तब हमें आइस मिलेगा. इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रीजिंग. सो वी गो इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. ये उसका ऑपोजिट है. यानी जैसे मैंने बोला है, एक के ऊपर एक फ्री ऑफर चल रहा है दोस्तों. सो डेल्टा फ्रीज H, it is nothing but it's a change in enthalpy. Okay, ये तो मुझे लगता है आप लोग को भी आ गया होगा अभी, because you are very smarter than me. I am very sure about it. So क्या चेंज करना है वो भी पता चल गया होगा आपको. When 1 mole of, यहाँ पे क्या आएगा चेंज? Yes, liquid आएगा. Undergoes कौन सा रिएक्शन होने वाला है? फ्रीजिंग at constant temperature and pressure. Okay, so that is the only change. Okay, the changes are this and this. वही चेंज इधर हो गया है. देखो अभी ये क्या हो गया? लिक्विड, और ये जो फ्यूजन था वो हो गया फ्रीजिंग. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. एक कंसेप्ट पढ़ो, उस हिसाब से दूसरे को घुमाओ, दोनों नहीं पढ़ने. ओके, am I very clear with all these points? अब रिएक्शन कैसे होगा दोस्तों? H2O, अब यहाँ पर लिक्विड आएगा, H2O, here it will be solid. Now delta H, if I say the magnitude remains the same, that is it will be 6.01 kilojoules per mole.
but only thing now it is going to be what? Minus, the reaction becomes what? Exothermic. Of course, the temperature is same, it's 0 degrees Celsius, or we call it as 273 Kelvin. Alright? I think the concept is very clear to you. So this is all about the first category, and that was about fusion as well as freezing, where we considered solid getting converted to liquid and the liquid getting converted into solid. बोलो समझ में आया आप लोग को? Perfectly? Yes? Great. Next transformation we go into, and that is, नाम से ही शायद पता चल जाएगा आपको, enthalpy of vaporization. Yes. समझा ना आप लोग को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, it is related to vapors. And vapors मतलब कौन सा physical state हुआ? Gas. So delta H vap. So once again, जैसे मैंने आपको बोला था, the starting part remains the same. Can you please recollect? Yes, the change in enthalpy. Yes, मुझे सुनाई दे रहा है, कोई मुझे डिक्टेट कर रहा है यहाँ पर. वेरी गुड, प्लीज डिक्टेट मी. मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे सिखाओ. थोड़ा मैं सिखाऊंगा, थोड़ा आप सिखाओ. Alright, so it is a change in enthalpy when 1 mole of, yes, अब यहाँ पे चेंजेस आएगा. Vaporization, formation of vapor, formation of gas. So gas is formed. Gas is not undergoing vaporization. Who is generally undergoing vaporization? It is a liquid. Okay, liquid को हीट करेंगे तो वो बॉइल होगा, वेपर बनेगा. So generally it is the liquid. तो यहाँ पर क्या लिखना है? When 1 mole of liquid undergoes vaporization. And condition you know very well. Yes, at constant temperature and pressure. ठीक है, ये हमें कंसिडर करना है. I guess everything is sorted out. Fantastic. Now going for reactions. Water is being considered? No. Yes. Liquid है ना? So it's water to be considered. Converted into what? Ice? No. Water vapor. So the reaction is H2O liquid converted into H2O gas. Alright? Now what happens is, लिक्विड को हीट करेंगे, बॉइल होगा तो वेपर बनेगा. So heat is to be supplied in endo, and therefore the sign has to be positive. Plus 40 kilojoules per mole, and the temperature is 100 degrees Celsius, or we say 373 Kelvin. Yani, when I'm going to supply 100 degrees Celsius of temperature, okay, then 40 kilojoules of energy is going to be absorbed, and thereby 1 mole of water gets converted into 1 mole of water vapor. Concept is clear? Fantastic. Now, one question I want to ask you is, H2O liquid, H2O gas, गौर से देखिएगा, physical state वही है, liquid gas. Delta H is equal to, endothermic है तो plus आएगा. The temperature is equal to 25 degrees Celsius, and it is 298 Kelvin. अब बताइए क्या वैल्यू आएगा? अब मैंने क्या किया है? The temperature from outside, okay, is reduced. जो 100 degree Celsius था वो 25 degree Celsius हो गया. Now, please be very clear. The total amount of energy associated is going to remain constant, as long as we are not going to change the substance and the amount of the substance. यहाँ पे देखो, ये दोनों रिएक्शन देखो, ना तो मैंने नेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंज किया, ना तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स चेंज किया. सो जितना टोटल एनर्जी मुझे इस रिएक्शन में लगेगा, उतना ही टोटल एनर्जी आई रिक्वायर ओवर हियर एज वेल. Now what do you mean by the total energy? Is nothing but the energy due to 100 degrees Celsius and plus the energy, this is 40 kilojoules. Ye together energy is required to convert that 1 mole of water into 1 mole of water vapor. अब यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया. तो जाहिर सी बात है, if the temperature goes down, the energy also will go down. Alright? But the total amount of energy should remain the same. So अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया है, टोटल एनर्जी मुझे बरकरार रखना है, तो मुझे बाहर से, सराउंडिंग से ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा कि कम लेना पड़ेगा? बरकरार रखना है ना, कांस्टेंट रखना है. अगर बाहर से भी कम लिया, अंदर भी कम हो गया तो और कम हो जाएगा.
ओके, तो अंदर का टेम्परेचर, अंदर का एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी कम हो चुका है, तो उसको बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से क्या, ओ यस, ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा, तब जाकर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन सेम। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू 40 से ज्यादा होगा कि कम होगा, कम ऑन बताइए। यस, हाँ आवाज आ रही है, ज्यादा होगा, और उसका एग्जैक्ट वैल्यू है 44 किलो जूल्स पर मोल। आई बात समझ में? सो व्हेन द टेम्परेचर वैल्यू डिक्रीजेस, दैट मींस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, so the energy of the surrounding should increase so that the total amount of energy remains same. Concept clear हो गया? Fantastic. अब देखिए दोस्तों, लिक्विड को हीट करेंगे, बॉयल हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, उस गैस को ठंडा करो, लिक्विड मिलेगा। गैस को ठंडा करना है, मतलब what has to be done? Are we going to add heat? नहीं, तो और गर्म हो जाएगा। ठंडा करना है, that means the heat has to be removed, out, exo। और इस प्रोसेस को दोस्तों आप अपने स्कूल में सुना होगा, कंडेंसेशन, नाम तो सुना है ना? यस, ओके, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो ये जो मैंने आपको बताया उसका वो उल्टा कर दीजिए, जैसे मैंने फ्यूजन पढ़ाया था और फ्रीजिंग उसका उल्टा करो, वैसे ही वेपराइजेशन की पढ़ाई करो और उसका उल्टा कर तो बन जाएगा क्या, कंडेंसेशन। सो वी स्टार्ट विद एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ऑलराइट, शुरू कर देंगे। यस, बहुत लोगों ने तो शुरू भी कर दिया, मुझे आवाज आ रही है यहाँ पर। ओके, बोलना चालू कर दिया। इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ, भी रुक जाइए थोड़ा। ओके, जोश में आके वही बोलते मत जाइए। लिक्विड की जगह क्या आएगा अभी, क्या आएगा, गैस। सो व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस undergoes, अब क्या आएगा, कंडेंसेशन, and condition is fixed at constant temperature and pressure. Okay, sorted out, fantastic. So what we have now is, यही रिएक्शन है, उल्टा कर दीजिए उसको। H2O gas gets converted into H2O liquid. Delta H will be equal to, do you recollect these what I told you in fusion freezing? कि जब तक nature of the substance and the number of moles of the substance is same, तो अगर reaction को reverse कर दिया हम लोग ने, so the numerical value will remain the same, only the sign will change. Okay, so delta H ये plus था, अभी वो क्या हो जाएगा, minus 40 kilojoules per mole. Temperature याद रखिएगा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस, या भी से 373 केल्विन। उसी प्रकार से H2O gas getting converted into H2O liquid, so we have delta H will be equal to minus of 44 kilojoules per mole. The temperature is 25 degrees Celsius, or we call it as 298 Kelvin. All right, sorted out. कोई दिक्कत है किसी को? So fusion opposite is freezing. Vaporization opposite is condensation. Fusion is endothermic, so freezing is exothermic. Similarly, vaporization endothermic, so condensation exothermic. किसी भी चीज को गर्म करना है तो heat is supplied, and when heat is supplied the process becomes endothermic. किसी भी चीज को ठंडा करना है, so the heat has to be removed, and removed means it is exothermic. All right, the concept is very clear. बराबर दिमाग में जा रहा है सबके? Yes. Now my dear friends, we go into the next transformation. It's the last one. Oof, sigh of relief, right? Great. So it's all about enthalpy of sublimation. ये भी आपको मालूम है, I'm very sure about it. Enthalpy of sublimation, और उसका symbol is delta H sub. Sublimation, I'm sure you know it very well. It's all about conversion of solid to gas. There are few solids, okay, which are in the solid state obviously, but if I heat it, it immediately gets transformed into a gaseous state without undergoing a liquid state. But then for a fraction of the second it does exist in a liquid state, लेकिन क्योंकि उसका जो residing time है
in the liquid state is less, and therefore we say that solid directly gets converted into a gaseous state. Alright? तो अभी क्या होता है, सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, हीट. अब हीट करेंगे तो क्या होगा, इन मतलब एंडो, यानी द डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव. कूल, यस. अब as usual, definition, fusion, freezing, vaporization, condensation, इतनी 4 बार मैंने आपको पढ़ाया है. तो सॉरी, थोड़ा आपने भी मुझे पढ़ाया, वापस इधर पढ़ाइए मुझे. ओके, क्या आएगा, शुरुआत वही करेंगे हम लोग. चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of gas, नहीं, solid. When 1 mole of solid undergoes sublimation at constant temperature and pressure. Clear? Sorted out हो गया? All right. Example. Same example will be consider H2O. यहाँ पर solid है. H2O gaseous. Ice getting converted to water vapor. मैंने ऑलरेडी बोला है, प्लस है, एंडोथर्मिक है, 51.08 किलो जूल्स पर मोल. टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. क्लियर हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि हम लोग ने शुरुआत किससे की, आइस से, इसलिए हम लोग ने बोल दिया. ठीक है. अब I will give you some other way of coming to this particular expression. कैसे करेंगे देखो. Number 1 is H2O solid getting converted into H2O liquid. क्या ये solid to liquid? Fusion. Delta H का वैल्यू याद आ रहा है? Yes, plus 6.01 kilojoules per mole. Temperature 0 degrees Celsius, or we say it is 273 Kelvin. And this is fusion. दूसरा रिएक्शन में लिखता हूं, H2O liquid getting converted into H2O gas. Liquid to gas, gas, vapor. Yes, बोलो क्या है? Yes, vaporization. Delta H का वैल्यू, यहाँ पे टेम्परेचर वी आर गोइंग टू कीप इट एट 0 डिग्री सेल्सियस. कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर. अब दोस्तों मैंने बताया था आपको, एंड दैट इज इफ द सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ तो एनर्जी कम होते जाएगी, और अगर एनर्जी को बरकरार रखना है तो फिर बाहर से, सराउंडिंग से और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. याद आ रहा है? तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 40 था, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए 44 था, तो अभी तो 0 डिग्री हो गया. तो 40 से कम होगा कि 44 से ज्यादा होगा? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर और कम हो गया है, तो मुझे बाहर से और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यानी 44 से ज्यादा. सो दैट मींस डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 45.07 kilojoules per mole. These are all experimental values, my dear friends. Okay, ये कोई मेरा लकी नंबर्स नहीं है क्या? Okay, I'm just writing that. This looks lucky. It's good. Okay, ऐसा कुछ नहीं है. It's all experimental values. ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये था, this reaction was nothing but vaporization. ये रिएक्शन है फ्यूजन, ये रिएक्शन है vaporization. ठीक है? Now what we do is we add both of these. Okay, similar species on the opposite side gets cancelled. ये मालूम है आपको? तो कभी कभी है ना, जोश में बहुत कैंसिल करते हैं, बहुत जोश आता है, कैंसलेशन करना रहता है, हमें भी बहुत जोश आता है. ओके, जब आप आंसर पेपर चेक कर दे तो अगर गलत आंसर है तो जोश आता है कैंसिल करने. तो प्लीज सोच समझ के क्या जोश अपना बनाए रखिए. ओके, अपना होश मत खो दीजिए. कैंसलेशन करने टाइम देख लीजिए अच्छी तरीके से, दिमाग को शांत रखो. ओके, सिर्फ H2O मत देखो, फिजिकल स्टेट भी देखो. तो ये देखिए आप, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये कैंसिल होगा बस, और कुछ नहीं. सो H2O solid gives you H2O gas. Solid to gas. अभी मैंने पढ़ाया क्या है वो, sublimation.
So this is sublimation. Next thing is, कौन सा algebraic operation हम लोग ने perform किया इसके ऊपर? Addition. So whatever algebraic operation that we are going to perform on the chemical reaction, the same thing, or on a reaction, let it be chemical or physical, the same operation has to be performed on the value of delta H. एक और बार दोहराता हूँ, जो algebraic operation, फिर वो addition, subtraction, multiplication, division, जो भी होगा, जो भी algebraic operation हम perform करेंगे reaction के ऊपर, वही सेम ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच. यानी हम यहाँ पर हम लोग ने एडिशन किया था तो इधर भी एडिशन करो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 51.08 किलो जूल्स पर मोल एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन. और दोस्तों आप देख लीजिए द सेम थिंग इज ओवर हियर. देखा आप लोग ने? यानी चाहे रिएक्शन वन स्टेप में हो या चाहे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल रिमेन व्हाट? सेम. और इसलिए तो उसको डेल्टा बोला जाता है. डेल्टा यू नो वेरी वेल, इट इज अ सिंबल ऑफ स्टेट फंक्शन. दैट मींस इट विल डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट. देखो ओके, चाहे रिएक्शन वन स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इज व्हाट? सेम. तो डेल्टा एच का वैल्यू विल आल्सो रिमेन सेम. Okay, it is not bothered at all whether the reaction takes place in one step or multiple steps. बोले समझ में आ गया? Fantastic. अब इसी के आधार पर हम एक नया फॉर्मूला भी मिल गया दोस्तों, और वो फॉर्मूला ये है कि sublimation delta H sub is equal to delta H fuse plus delta H vap. यानी fusion plus vaporization is sublimation. Okay, this is what we get. एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें. Am I clear with this part? और इस तरीके से if you want to go into say like this, okay, ये solid है, ये liquid है और ये gas है. तो if you talk about solid getting converted into a liquid, so we say it is enthalpy of fusion. Solid to gas है तो we talk about enthalpy of sublimation. When we talk about liquid to gas, that means we talk about vaporization. समझ में आया आप लोग को? Okay, this is what the diagram is. Solid, liquid, gas. Solid to liquid, fusion. Solid to gas, sublimation. Okay, liquid to gas, vaporization. ऐसे फिर डाउनवर्ड एरो करेंगे, यानी लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज क्या आएगा? गैस टू लिक्विड, इट इज कंडेंसेशन. तो ये जो भी रिएक्शंस मैंने बताया है यहाँ पर, these are all एंडोथर्मिक. और इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? एक्सोथर्मिक. एम आई वेरी क्लियर विद दिस पार्ट? बोलो, ये एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? Great. Now, my dear friends, we begin into the next part, and that is about enthalpy of molecular or ionic or atomic transformations. Enthalpy of molecular, or we call it as ionic, or we call it as atomic transformations. So I hope you have understood the terms very well. Molecular, it can be in the form of a molecule, it can be in the form of ion, or it can be in the form of atoms. So we start with the first one. Okay, the name suggests very well that it is all about enthalpy of ionization. So it's very clear now when you talk about enthalpy of ionization, that means that it is resulting in the formation of ions. Ions means it is charged species. Charges are of two categories, positive as well as negative. Positive को cation बोलते हैं, negative को anion बोलते हैं. तो ये किस तरीके से होगा? By means of electrons. If an atom gains electron, or if any species gains electron, then it gets a negative charge.
and if it loses electron, it will get a positive charge. Now also one more thing which I want to tell you is, whenever a species is either going to accept an electron or lose an electron, energy is associated. जब भी एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो लूज करता है, तो उसके साथ कौन संबंधित है? एनर्जी। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन और एनर्जी की जो दिशा है वो ऑपोजिट है। मैं आपको और सरल करके बताता हूं कि मान लीजिए एक स्पीशीज है, लेट अस कंसीडर एन एटम ओनली, कम ऑन, ओके, एट द सेंटर देयर इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, सो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आउट, सो एनर्जी इज गोइंग टू कम इन। आई समझ में बात? इलेक्ट्रॉन आउट, सो एनर्जी इज इन। इन मतलब इट इज एब्सॉर्ब, एंड एब्सॉर्ब है तो दैट मींस इट इज एंडोथर्मिक। उसी तरीके से इफ आई एम गोइंग टू शो इट लाइक दिस वे, दैट मींस द एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और अगर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हुआ तो फिर व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। रिलीज मतलब आउट, आउट मतलब इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एक्सोथर्मिक। समझ में आया? यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is an endothermic process and gain of electron is an exothermic process. Okay? Next thing is, आप ये भी जानते हो अच्छी तरीके से कि generally speaking metal के पास tendency है to lose electron, यानी this category, और non-metal के पास tendency है to gain electrons. So that means it is this category. Alright? So we consider the first one, and that is with respect to the metal. So when you talk about enthalpy of ionization, okay, there are first possibility is that we say it is a change in enthalpy when 1 mole of, ये तो अगर आपको याद है मैंने आपको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी बताया था, वो सेम ही है। सो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड मतलब अलोन gaseous atom loses electron to form an isolated gaseous ion. Okay, it is going to be this way. Isolated मतलब it's not going to be combined. Okay, gaseous, why? Because gaseous एक ऐसा state है दोस्तों कि जहाँ पर force of attraction is minimum, so energy required is going to be less. हमेशा याद रखिएगा, thermodynamically the particular reaction has to be favorable. Thermodynamics always talks about energy, and energy should be as low as possible, so that means the stability is high and therefore the reaction is favorable. Okay, ये याद रखिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे gaseous state कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर isolated state कंसीडर कर रहे हैं। अगर combined state है तो पहले तो उसको अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मेरे पास सॉलिड स्टेट है तो उसके अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज थर्मोडायनामिकली नॉट फेवरेबल माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस आइसोलेटेड गैसियस एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, तो जब एक एटम, यहां पर मैं एक और शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, अगेन दैट इज इट कैन बी एन आयन एज वेल। Okay, either an atom or an ion loses electron and it gives you an isolated gaseous ion. Okay, ion भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि then also it will give you an ion only. और अगर एटम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो it will become an ion because उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्लियर? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सोडियम। सोडियम in the gaseous state, it's a metal, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। Okay, that means we are going to show this way. यानी इलेक्ट्रॉन has to be on the right hand side. ये याद रखिएगा। ओके, डायरेक्शन याद रखो तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बाय ऑल दीस कांसेप्ट्स, ऑलराइट, कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखना है, ऑन द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड। देखो लॉस मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑन द राइट हैंड साइड। इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, okay, and plus electron minus, and delta H will be equal to positive 494 kilojoules per mole. यानी इतना एनर्जी कर देंगे to 1 mole of isolated gaseous sodium, then it is going to lose electron, it is going to form 1 mole of isolated gaseous sodium ion. Okay, and this enthalpy is called as enthalpy of ionization. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करके दूंगा कि एटम की जगह साथ साथ मैंने आयन भी क्यों लिखा है। नाउ यू टेल मी वन थिंग इज दैट व्हिचएवर स्पीशीज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इज इट लाइक दैट ऑल ऑफ देम हैव गॉट ओनली +1 चार्ज? +2 +3 +4 चार्ज होता ही नहीं है? होता है, जरूर होता है।
ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम की बात करें तो +2 होता है चार्ज, एल्यूमिनियम की बात करें तो +3 होता है, लेड और टिन की बात करें तो +4 होता है। ऑलराइट, सो फिर क्या होगा इस सिचुएशन में? दैट मींस दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। और जब ऐसा सिचुएशन होता है कि व्हेन इट इज गोइंग टू लूज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट मींस ये जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, एक साथ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात की जाए, सो कैल्शियम के केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, okay, calcium has got a charge of what? +2. So the steps will be nothing but calcium ion, it's in the gaseous isolated state, it will be Ca plus electron minus, and then in the second step Ca plus gaseous state, once again it is going to lose an electron, it is going to give you Ca2 plus an electron. इस तरीके से प्रोसेस होगा। तो यानी ये भी आयनाइजेशन है, ये भी आयनाइजेशन है, लेकिन ये सेकंड स्टेप में जो आयनाइजेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? फ्रॉम द आयन, और इसलिए मैंने यहां पर लिखा है इट इज आयन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? वेरी गुड, राइट। वी गोइंग टू द ऑपोजिट पार्ट ऑफ दिस, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दिस सिचुएशन व्हाट आर वी गोइंग टू से इज कि इट इज the change in the enthalpy when a gaseous atom or an ion accepts electron to form a gaseous ion. Okay, opposite कर देना है, मतलब I am talking about this case. So what will happen is, we have Cl, which is in the gaseous state, electron is accepted, it gives you Cl minus in the gaseous state. So delta H is equal to minus of 349 kilojoules per mole. Okay, this is what it is. अब यहाँ पर accepted है, तो अपना जो हाथ होगा वो कैसा होगा? अपनी तरफ आएगा। Okay, so it is accepted, so Cl minus बन जाएगा। Whenever electron is lost, it gets a positive charge. Whenever electron is accepted, it gets a negative charge. अब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन, you know very well, because energy is released. देखो आप यहाँ पर, so the reaction becomes what? Exothermic. So it's a minus sign. So इसका मतलब क्या हुआ कि when 1 mole of chlorine atom in the gaseous state accepts an electron to form 1 mole of gaseous chloride ion, 349 kilojoules of energy is released. ये इसका मतलब होता है of what? Electron gain enthalpy. आई बात समझ में सबको? Everybody, the concept is clear? Great. Now my dear friends, the next reaction is all about enthalpy of atomization. Okay, next one is enthalpy of atomization. Now as the name suggests, when you talk about atomization, that means it is formation of atoms. Alright, so I call this as delta atomization. Alright, शुरुआत as such you know very well. It is the change in enthalpy when 1 mole of a gaseous molecule, क्योंकि you know very well, if you want to have atoms, you need to get it from a molecule. Molecule को तोड़ेंगे तो हमें atoms मिलेगा, और अगर तोड़ना है तो we require what? Energy. So energy is in, energy is absorbed, and that means it is called as what? Endothermic. So change in enthalpy when 1 mole of a gaseous molecule breaks into gaseous atoms. Okay, change in enthalpy when 1 mole of a gaseous molecule breaks into what? Gaseous atoms. Okay, and that is called as enthalpy of atomization. Simple example I give you, chlorine molecule, Cl2, Cl ऐसे लिखना होगा, molecule है, gaseous state में है, we supply energy, so this bond breaks, and both the chlorine, now atoms are going to be formed and they are separated. So I write down 2 chlorine in the gaseous state, okay, and delta H is going to be positive क्योंकि energy supply किया गया है, so it is endothermic.
और उसका वैल्यू है 242 kilojoules per mole. Okay, so this is all about enthalpy of atomization. तो पहले हम लोगों ने ionization की बात की, तो उसमें there are two possibilities, either a cation or an anion. Cation के टाइम पे we talk about the process where the electron is lost, so energy comes in, and therefore we say it is endothermic. Next is I talk about electron gain enthalpy, where the electron is gained, so energy is released, so it is exothermic. Now we are talking about enthalpy of atomization, where we talk about a molecule, and those molecules will break down into atoms, okay, like this. Okay, so chlorine molecule breaks down and you get the energy which is being required is 242, so as to break this one molecule of chlorine. Similarly, if you want another example, I talk about methane, that is CH4 in the gaseous state, and I get carbon and 4 hydrogen. The delta H value for this is plus 1660 kilojoules per mole. Okay, this much is being required. This much of energy is required to break the bonds, whatever the number of bonds which are present in the methane molecule. So as a result of which I will be getting carbon as well as hydrogen, and both of them will be in the gaseous state. Okay, so I guess the concept is clear up to this. Okay, this is all about the enthalpy of atomization. Perfect? Yes. Now my dear friends, under this particular category, we move on to the last point. And that is about enthalpy of solution. It's enthalpy of solution. As the name suggests, when you talk about solution, the very first thing which comes into your mind, and that is all about solute and solvent. Solute एक ऐसा substance होता है दोस्तों जो खुद डिसॉल्व हो जाता है, और solvent एक ऐसा substance होता है जो दूसरे को डिसॉल्व करता है. और जब सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. एंड दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. गेटिंग इट? सो हाउ टू से इज इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी it is what? The change in enthalpy when 1 mole of a solute is dissolved in a specified amount of the solvent. Okay, and the most important point is at constant temperature, because you know very well temperature is one of the parameter which affects solubility. रूम टेम्परेचर पे अगर एक सोल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है तो अगर मैं उसको गर्म करता हूं तो वो डिसॉल्व हो जाता है. ये आपको भी पता है अच्छी तरीके से. ओके, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है. सो इट इज अ चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. हमारे पास एक और टर्म है, एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन at infinite dilution. क्या ये? At infinite dilution. So everything else remains the same. Only thing is कि ये जो लिखा है ना, specified amount of the solvent, सिर्फ उसी को चेंज करके यहां पर हमें उसको क्या मेंशन करने का है कि in infinite amount of the solvent. In other words, it is in large amount of the solvent. Okay, solvent की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, should be in excess. Okay, that is what is called as infinite. Okay, तो ये दो difference है. Otherwise, the definition remains the same of enthalpy of solution at infinite dilution. Alright? Now, ये जो पूरा process है takes place in 2 steps. Okay, let us consider a salt, and that is MX. It's a solute. उसको डिसॉल्व किया है वाटर में. तो ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे होता है मैं बताता हूं आपको. स्टेप नंबर 1,
the salt MX will break into its corresponding ions, that is M plus and X minus. The energy which is being associated over here is called as crystal lattice enthalpy. What is being called as crystal lattice enthalpy. Now यहाँ पर क्या हो रहा है? Bond is being broken के bond is formed. गौर से देखिएगा, M और X के बीच में bond था, अब ये टूट गया है. Salt है. Every salt is made up of cation as well as anion. तो जब bond टूटा तो मुझे क्या मिला? Cation as well as anion मिला. ओके, तो बॉन्ड टूटा है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा. ओके, एंड एनर्जी दे दिया है, मतलब इट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब्ड एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक. और अगर वो एंडोथर्मिक है, दैट मींस द साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी याद रखिएगा, इट इज एंडोथर्मिक एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव. ठीक है. सेकंड स्टेप में व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, ये जो हमें सेपरेटेड कैटायंस और अनायंस मिले हैं, नाउ दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो M plus water molecule, it will be say X number of water molecules. Okay, so MH2OX and a positive charge. Similarly, X minus with say Y number of water molecules, so it is going to give you X H2O Y minus. तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेटेड कैटायन एंड अ सॉल्वेटेड अनायन. ओके, अब यहां पर आप गौर से देखो, इसमें और इसमें ऑपोजिट है. यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तब जाकर मुझे आयंस मिला. अब यहां पर आयंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया है, सो दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन. व्हाट इज इट? इट्स बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके, डेल्टा हाइड H. अब यहां पे ये प्रोसेस बना है, बॉन्ड बना है, एंड देयरफॉर वी से इट इज एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव साइन. ओके, इट्स एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्म. बॉन्ड फॉर्म हुआ तो स्टेबिलिटी हो गया, बिकॉज बॉन्ड इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो अट्रैक्शन से हमेशा सिस्टम स्टेबल हो जाता है. एंड व्हेन द स्टेबिलिटी इज अचीव्ड, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिश्ता आप जानते हो, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो स्टेबिलिटी बिकम्स हायर, द एनर्जी गोस लोअर. और एनर्जी नीचे कैसे जाएगा? देने से जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक. और नीचे गया है, एनर्जी कम हो गया है, और कम हुआ मतलब नेगेटिव. आई बात समझ में? तो ये दो प्रोसेस है और ये दो स्टेप है, आई विल से, इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी. द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, एंड द सेकंड स्टेप इज द आयंस गेट्स एसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, और इस तरीके से व्हाट आई विल से इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन will be equal to the crystal lattice enthalpy plus hydration enthalpy. ये फॉर्मूला मिल गया हमें. Okay, the enthalpy of solution is equal to crystal lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Okay, then you get finally this particular answer. Okay, and then you come to know whether the heat is going to be absorbed or released. क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब भी एक सॉल्यूट को मैं सॉल्वेंट में डालता हूं और वो पूरा प्रोसेस जब तक होगा, ये दोनों स्टेप हो जाने के बाद जब हमें पता चलेगा द एंटायर सॉल्यूट इज गेटिंग सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. नंबर वन पॉसिबिलिटी इज आइदर द एनर्जी इज रिलीज्ड और द नंबर टू पॉसिबिलिटी इज आइदर द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. इट ऑल डिपेंड्स. What it depends on? It depends on the nature of the solute. It depends upon the nature of the solvent. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने देखा होगा, आपने लैब में अगर आपने तो सॉल्यूशन फॉर्म में देखा होगा ऑन योर टेबल, बट एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट पैलेट्स. तो इफ आई एम गोइंग टू डिसॉल्व इट इन वाटर, ओके, अ कूल वाटर, ओके, वाटर लिया मैंने बीकर में, एंड इफ आई एम गोइंग टू ऐड NaOH इनटू दिस इन द फॉर्म ऑफ वाइट पैलेट्स, ओके, और उसको मैंने स्टर किया, तो वो बीकर इतना गर्म हो जाता है, तो अगर आपने हाथ में अगर बीकर को पकड़ा है तो यकीनन वो बीकर आपके हाथ से छूट जाएगा एंड विल फॉल डाउन. So why the beaker is becoming so hot? You have taken a cold water, you haven't taken a hot water.
The simple part is because the reaction between water and NaOH is releasing heat, and as a result of which, that NaOH is getting soluble in water, and therefore we say that the reaction is exothermic. On the secondary example, I'll tell you ammonium chloride. It's a white color powder form. Okay, you take once again water in a beaker, cold water, and you add NH4Cl into it and you stir it. Okay, वो beaker ठंडा cool लगेगा. So that means the energy is going to be absorbed. Alright, so that's what I want you to see, understand by means of this example, that we never say that enthalpy of solution is always going to be exothermic or it's always going to be endothermic. It all depends upon the nature of the solute and the nature of the solvent. बोलो समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? Everyone very clear with this? Yes. Now, अगर आपको enthalpy of solution समझ में आ गया अच्छी तरीके से उसके फॉर्मूला के साथ, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ. So it becomes very clear to you. एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज NaCl, नमक. आप सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि नमक आसानी से पानी में डिसॉल्व होता है. ओके, इट्स नॉट दैट ओनली द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स कैन से दिस, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी मालूम. तो ये रिएक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ. NaCl plus aqueous means water. NaCl is in the solid state and you get NaCl aqueous. इसका डेल्टा H वैल्यू इज +4 kilojoules per mole. ओके, इसका मतलब ये हो जाता है कि when 1 mole of NaCl is going to be dissolved in water, the amount of energy which is to be supplied is going to be how much? 4 kilojoules. अब कई बार क्या होता है, एनर्जी इज टू बी सप्लाई, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि एनर्जी मतलब उनके दिमाग में रहता है हीटिंग. तो द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, वी डोंट हीट NaCl and water so that it gets dissolved. Okay, we take a glass of water, okay, we add into it NaCl, okay, and it gets dissolved. But then, my dear friends, one simple point which I want to say is, don't you think that you need to store it so that each and every particle of NaCl which you have added is going to be dissolved? So that stirring also is giving as good as energy. So please don't consider that plus है तो endothermic है, that means it is heat and that means you have to put on the burner and you start heating it. No, it's not like that. Okay, that is some mechanical energy which you are going to give by stirring. Okay, so that is what the energy which we are talking about over here. So 4 kilojoules of energy has to be given so that the 1 mole of NaCl gets dissolved in water. Okay, and you get an aqueous solution over here. Okay? Now, actually, how the reaction takes place, as I told you, the reaction takes place in 2 steps. Okay, step number 1 is NaCl first of all breaks into Na plus and Cl minus. It's called as a crystal lattice enthalpy. I've already explained you before. Crystal lattice enthalpy is always endothermic क्योंकि इस bond को तोड़ना है मुझे. Alright? And that is going to be 790 kilojoules per mole. Plus. Okay? अब क्या होगा? Next point is, ये हो गया step number 1. Step number 2, the sodium ions gets surrounded by X number of water molecules. So I get NaH2OX plus. Cl minus gets surrounded by Y water molecules. So I get ClH2OY minus. So this is enthalpy of hydration. What is? This is enthalpy of hydration. Bond form हुआ है, stability is achieved, energy goes down, so it has to be what? Negative. और उसका वैल्यू है 786 kilojoules per mole. Got it? So these are the 2 steps which I've already explained you before. But the only difference is, there I explained you in a general manner, MX, and here I'm using is NaCl. Right? That is the only difference. And that's the reason I got specific values as well. Now we go back to the formula. Enthalpy of solution का formula था crystal lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Okay, I hope you recollect this. So please substitute the values. So it is 790 minus 786. So that is going to be plus 4 kilojoules per mole. This is the enthalpy of solution. और देखो ये वैल्यू वही है +4 kilojoules per mole. समझ में आया? So ये मैंने 1 step में आपको रिएक्शन लिख के दिया है. ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है उसका कि it takes place in 2 steps. लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि डेल्टा stands for
change, and it is a symbol of what? State function. So whether the reaction takes place in one step or multiple steps, okay, the value is going to remain the same. So it is +4. Okay, so the reaction is what we call it as endothermic. Alright, तो इस example से समझ में आया आप लोग को what exactly is enthalpy of solution? Yes. And with this particular enthalpy of solution, we complete this segment where we have talked about enthalpy of transformations. First one was a physical transformation where there was a change only in terms of physical state. उसमें हम लोग ने fusion के बारे में बताया, solid to liquid, freezing is liquid to solid, फिर vaporization, liquid to gas, condensation, gas to liquid, sublimation, solid to gas. फिर हमने बात की थी about enthalpy of molecular, atomic and ionic transformation. उसमें हमने बात किया enthalpy of ionization, metal will lose electrons, फिर electron gain enthalpy, जहाँ पर non-metal is going to gain electron, enthalpy of atomization, where a molecule breaks down into its constituent atoms, and then finally we talk about enthalpy of solution, where a solute is going to be dissolved in a particular amount of the solvent and the energy is associated. Alright? So in all these examples, in most of the cases, okay, the enthalpy value signs are fixed. Either the reaction is endothermic or it is exothermic. But this is not exactly so in this category of enthalpy of solution. Enthalpy of solution, as I told you, it depends on the nature of the solute and the nature of the solvent, and accordingly, it can be either endothermic or it can be exothermic. बोला समझ में आई आप लोग को? Fantastic.